Hey guys, what's up and welcome back to my channel. My name is Mohammad Rafi और आप देख रहे हैं RAYTECH Studio. Well, today we are going to build our very first custom mechanical keyboard, guys. As you know, in market there are many varieties and types of mechanical keyboards, different switches and keycaps. But this is going to be our really first custom mechanical keyboard, and trust me guys, it's so much interesting to build your own keyboard. And for this, I will like to thanks to Skippy Customs, cablemod and Tai-Hao Keycaps for sending all the parts of this custom keyboard, guys. Especially Skippy Customs, they have sent nearly all the parts of this custom mechanical keyboard, guys. I'm mentioning all the links and the details into the description of the companies and sites. Do visit them, and without wasting any of the time now guys, let's start the show. Before moving further guys, quickly go down and press the subscribe button and also the bell icon so can you receive all the notification of our future upcoming videos. So now let's see all the components which are required to build this custom mechanical keyboard. So guys, following are the things that you and the parts you will be required for making a custom keyboard. First of all guys, you will require a front plate chassis. After that you will require a PCB of the keyboard, and then bottom plate chassis. These are made up of carbon fiber, and then keyboard stabilizers and the screws that will be required to screw in the stabilizers. After that you will require some of the oil for the springs and the lube for the switches and the switches themselves, and a switch opener. After that you will require some of the key puller and keycap puller and a switch puller. After that some of the brushes you will be required for applying the oil and the lube on the switches, and then some base supporters for the keyboard, and then finally some of the keycaps that you will be required for the whole build for the keyboard. Moreover guys, all of these things you can easily buy from the side of the Skippy Customs, but only the switches that you will only the keycaps you will have to buy from some other site, जो कि आपने guys आपको जो साइट पसंद है वहाँ से आप अपने पसंद की keycaps buy कर सकते हैं. बाकी सब चीज़ें जो है आपको Skippy Custom की साइट के ऊपर बहुत ही easily जो है वो available हो जाएंगी. Well, these are all the parts which are going to be used in this custom mechanical keyboard. You can also go and visit the Skippy Custom site to buy all the parts of your own choice and colors, guys. Now let's start the whole procedure and building our keyboard. So guys, these are the Gateron MX white switches. You can see it. And for lubing and oiling the spring of the switch, you will need a switch opener to open the switch completely, which you can buy easily from a Skippy Custom site or anywhere else you want to. Just place the key into it like this, and press it, and the switch is open like this. Well, it's so much easy. It looks a bit tough, लेकिन बहुत आसानी से जो है guys जो है वो switch open हो जाता है और इसके सारे parts जो हैं वो बाहर आ जाते हैं. So guys, after opening every mechanical switch, you will find these 5 things into all the switches. First of all, you will see this thing. This is upper housing, guys. Upper housing of the switch, and after that you will find this small white thing which is called stem part of the switch, and after that you will get a mechanical switch spring which is a metal switch simple, and then you will see the lower housing, and in this housing you will also find a cross print which helps in clicking and transferring the signals to the keyboard and the PCB. So guys, as you know that these are the mechanical switches springs जो कि हमने switches के अंदर से खोल के निकाले हैं, और अब इनको जो है इनकी ऑयलिंग करने के लिए हमारे पास जो है वो है रोब्रिकेंट 105 स्प्रिंग ऑयल, जो कि स्किपी कस्टम्स वालों ने ही हमें भेजा है, जो कि स्पेशली इन स्प्रिंग्स के लिए जो है ये ऑयल जो है वो डिज़ाइन होता है. और गाइज एज यू नो दैट के स्प्रिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए गाइज इनको बेस्ट वे यही है कि इनको जल्दी ऑयलिंग करने का वे ये है कि एक इस तरह का जो है वो एयर सील बैग जो है वो आप कहीं से भी जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा. उसके बाद गाइज इसको ओपन करें और ये जितने भी स्विचेस हैं आप इसको इसके अंदर जो है वो डाल दें. स्विचेस को इसके अंदर डालने के बाद गाइज जस्ट जो है ना आपने
इसको थोड़ा सा इसमें एयर ब्लो कर लें इस तरह से। उसके बाद गाइज इसके अंदर जो है अपने ऑयल के जो है वो ड्रॉप्स डालने हैं। ऑयल आपने गाइज इतना डालना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ना हो, क्योंकि ये मैंने थोड़े से स्प्रिंग्स डाले हैं। अगर आपने तकरीबन जो है वो सारे स्विचेस के स्प्रिंग्स डालने हैं जो कि नियर टू 70 to 80 स्प्रिंग्स होंगे, तो उसके लिहाज से गाइज आई थिंक सो 100 to 200 जो है वो ड्रॉप्स जो है आपने ऑयल के डालने हैं। जिस तरह ये मैं भी डाल रहा हूँ इस तरह करके, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो है इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है। उसके बाद गाइज ऑयल डालने के बाद जो है इसको एयर सील आपने कर देना है इस तरह से, और एक जगह से इसके अंदर थोड़ी सी एयर ब्लो कर देनी है। तो गाइज ये इस तरह से जो है ये एयर सील हो जाएगा। एयर सील करने के बाद आपने जो है इसको इस तरह से प्रॉपरली शेक करना है। प्रॉपरली शेक करने के बाद गाइज ये जो है प्रॉपरली इनकी जो है वो ऑयलिंग हो जाएगी, और ऑयलिंग करने के बाद गाइज आपने इनको सिंपली अपने स्विचेस के लिए जो है वो निकाल के जस्ट यूज़ करना है। सो गाइज नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू ल्यूब स्विच। Well guys, first of all, as I have told you about the spring, how to oil the spring. Now coming towards the other three parts of the switch, how to lube it. For that you will require a lubricant 205 G0 switch lube, which is also you can buy easily from the Skippy Customs site, and a 0 number brush for applying all of the lube on the switches. And let me show you how to apply and how much amount you should be applying on the whole switch. First of all guys, talking about this part, the upper hosing, you just need to dip once like this, and you can see the amount of I have been using on the brush. Now first of all guys, lube on this side and then the other side like this, and then this inner part just like this. You just only need to apply only one layer. And now moving towards the stem part, at the stem side you need to lube all the four sides. First of all this one, you just need to apply a single layer, and then this part, okay, and then over here, and then this one. Now coming at the end, at the lower housing of the switch, you just need to apply at these ends, these walls like this, and then the inner part. And guys, make sure not to use too much lube. You just need to use a small layer like this. Even this is more, I think so. Just this. Then this will be really fine, and the switch will be lubed properly. And after lubing all the switches guys, you just need to place, for this you can also use a full on made up table, जो कि आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर आप बहुत सारी स्विचेस रख के जो है इकट्ठे उनको जो है वो बंद कर सकते हैं। पर एज वी डोंट हैव दैट, सो गाइज वी आर डूइंग इट मैनुअली. इट विल टेक सम टाइम like this, and this way the switch will be easily closed. So guys, now talking about the stabilizers of the keyboard PCB, how to lube them. The standard method which everybody use, they used to open all the key switches and just take it out like this, which is I think a hard way, and it can also break the whole stabilizer. A easy way which I will be going to tell you, this is like I think this is a tough way, which can cause breakage into the stabilizer, or some will also produce some kind of an issue. So now guys, I have just discovered a small way which you can, an easy way through which you can easily lube these
things. Now if you just lift this side, apply some of the lube over here on this side and on the all four sides, because all the four sides used to touch at the inner these walls of the switches. And the thing you need to be applying all the lube is these inner sides like this, and also the pin which is over here. Okay, like this guys. And for screwing them on the keyboard you will need these small screws which will be included into the box and all the things, and you can easily screw them into the keyboard. Well, this is the easiest way to and the quickest way to lube these, and I will recommend this way. So guys, now these are all the parts we have gathered over here. तो अब गाइस हम अपना स्टार्ट करेंगे कस्टम कीबोर्ड की बिल्ड को. तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेबलाइजर्स की स्टेबलाइजर से. स्टेबलाइजर जो हैं इसके हम लगा लेते हैं इसके ऊपर. स्टेबलाइजर्स आप जैसे कि देख सकते हैं, दीज आर स्टेबलाइजर्स, और ऑलरेडी हमने आपको आगे इनको दिखाया था कि ल्यूब कैसे करना है. ये ऑलरेडी ल्यूब्ड है, तो बस अब इनको हम फिक्स करते हैं. फॉर पीपल गाइज जो कि मेरे से पूछेंगे कि आप ये जो किट यूज़ कर रहे हैं, ये किट जो है गाइज ये होटो की प्रिसीजन किट है, जो कि आगे हम सून इसकी भी वीडियो जो है आपको लॉन्च करेंगे. बहुत बेहतरीन किट है, और भी इनके हमारे पास टूल्स आए हुए हैं और दे आर सपोर्टिंग अस विद देयर टूल्स. काफ़ी इजी कर देते हैं काम को गाइज, और ईज़िली जो है हम इनसे अपने स्क्रूज वगैरह को भी जो है वो टाइट कर लेते हैं. So guys, all the stabilizers are now being fixed on the PCB of the keyboard. खैर इतना मुश्किल नहीं है इसको फिक्स करना, और इसकी lubrication तो हमने पहले ही आपको पता की हुई है. So now guys, we will be going to we will keep it over here. So now guys, we will be fixing all the bridge support of the chases, जिसको हम इसके साथ जो है वो अटैच करेंगे. So guys, all the bridge support are now fixed, you can see. इसके अलावा guys, इसके जो है वो बेस सपोर्टर्स को भी जो है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं. So the base plate chassis is fully ready, as you can see. So now let's come back to the PCB. तो गैस अब जो है हम इसको फिक्स करते हैं, इसकी प्रॉपर फिक्सेशन करते हैं. अब द मेन थिंग इज दिस के हमने सबसे पहले गैस इसकी अब जो है इसको अलाइन करना है. अलाइन करने का तरीका इसको ये है कि एट द ऑल फोर कॉर्नर्स एक जो है आप इसका स्विचेस जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको आप फिक्स कर लें, जिसकी वजह से ये ईज़िली जो है ये फिक्स हो जाएगा. So now guys, as you can see के PCB और अपर बेस जो है अपर प्लेट को जो है वो चेजेस को फिक्स करने के लिए you have to attach all four of the keycaps, ताकि आपकी जो PCB है वो डायरेक्टली अलाइन हो जाए प्रॉपर डायमेंशंस के मुताबिक, ताकि आप बाकी अगर कीज़ को जो है वो फिक्स करें तो ये जो आपके इसके अंदर इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत ईजिली दीज पॉइंट्स गेट बेंड, जिसकी वजह से जो है ये फिर आपको की कैप को जो है ना इतना मसला नहीं होता टूटते, लेकिन बार बार बेंड होने की वजह से जो है वो टूट भी सकते हैं. इसलिए मैंने चारों को जो है वो अलाइन करके लगा लिया है. तो नाउ गाइस जो है नाउ आई विल स्टार्ट अलाइनिंग ऑल द की कैप्स.
सो नाउ एज यू कैन सी ऑल द वाइट स्विचेस आर फिक्स्ड एंड गुड टू गो। देख सकते हैं कि गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसकी फिक्सिंग हो गई है। अब गाइस हम इसको जो है इसकी जो बेस प्लेट चेंजेस है उसके ऊपर जो है इसको हम इसके साथ फिक्स कर देते हैं ताकि जो है ये प्रॉपर इसकी अलाइनमेंट हो जाए। की कैप्स जो गाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो हैं Tai-Hao की तरफ से जो है हमें आए हैं। मैं नीचे डिटेल्स के अंदर इनका लिंक भी डाल दूंगा अगर आपने बाय करना है। बहुत ही प्रीमियम और बेहतरीन किस्म के की कैप्स जो है ये बनाते हैं। इनकी जो हमारे पास थीम अभी इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, ये जो है विंटेज ब्लू कलर की इनकी थीम है जो कि हमारे कीबोर्ड की थीम के साथ जो है प्रॉपरली फिक्स होती है। लेकिन वन मोर थिंग गाइस, बिफोर फिक्सिंग ऑल ऑफ द की कैप्स, एक बार अपने कीबोर्ड को जो है वो फुली बिल्ड करने के बाद जस्ट अटैच इट विद द सी टाइप केबल विद योर कंप्यूटर एंड इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर विया, जिससे आप गाइस इसके जो स्विचेस हैं उनको आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपरली सारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मोर ओवर के इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सो विया यू कैन ईजिली डाउनलोड फ्रॉम द गिटहब और द गूगल। इट विल हैव यू इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सारे स्विचेस को भी चेक कर लेगा और उसके बाद आप ईजिली कॉन्फ़िगरेशन को देकर जो है वो अपने की कैप्स को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। So guys, all of the keycaps are fixed. We have some of the artisan keycaps जो कि मैं इसके अंदर जो है वो फिक्स करने का मेरा दिल है। तो ये 3 प्रेसेस वैसे मैंने सर्च की हैं पर ऐसा मुझे अच्छी नहीं लग रही। We have some other rubber double shot keycaps as well, जो कि ये भी जो हैं ये Tai-Hao वालों की तरफ से ही अब आए हैं। तो आई वॉज ट्राइंग टू मैच सम ऑफ द कलर्स के इसमें कैसे लगते हैं कैसे नहीं। सो लेट्स चेक। The keyboard is now fully prepared. ऑल्सो गाइज आप देख सकते हैं कि इनको जो इनकी जो ये कलर है ये इसके अल्फ़ाबेटिकल जो कलर है उसके साथ भी जो है वो मैच कर रहा है, उसके लिहाज से भी काफ़ी अच्छा लगता है। Now coming to the design and the build of this whole mechanical keyboard guys, as you can see the base plate and the upper chassis we have used in this keyboard are totally made up of carbon fiber, and this carbon fiber is not like a sticker type of a carbon fiber बल्कि ये एक ओरिजिनल कार्बन फाइबर की प्लेट्स हैं जो कि आप स्किपी कस्टम्स ने जो हैं वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स में जो है ये अवेलेबल है गाइज। द होल कीबोर्ड इज इनक्लोज्ड इन दीज 2 प्लेट्स। इनके बीच में जो है आती है पीसीबी प्लेट जो कि इसके बीच में फिक्स होती हैं, एंड पीसीबी प्लेट इज स्वैपेबल पीसीबी प्लेट। एज यू नो इन मार्केट यू कैन आल्सो फाइंड पीसीबी प्लेट जिसके ऊपर आपको जो है वो स्विचेस को सोल्डर करना पड़ता है और उसके बाद यू कांट रिमूव दैट स्विचेस। But in this swappable PCB guys, you can easily remove and change your switches anytime as according to your choices. And talking about the overall look of the keyboard guys, this carbon fiber plate gives a really nice and static look to the whole keyboard. And talking about the RGB function of this keyboard, the RGB function of this PCB is really great, gives a really standout look to the whole keyboard. Now talking about the keycaps guys, keycaps बहुत ही किस्म के और डॉप किस्म का जो है ये लुक प्रोवाइड कर रहे हैं
पूरे कीबोर्ड को। दीज की कैप्स आर सेंड बाय Tai-Hao की कैप्स गाइस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने 3 टाइप को जो है वो डिफरेंट की कैप्स को यूज़ किया हुआ है। द मेन की कैप्स आर आल्सो फ्रॉम द Tai-Hao की कैप्स। और यहाँ पर जो थोड़े से रबड़ की कैप्स हमने यूज़ किए हैं, दोज आर आल्सो फ्रॉम द Tai-Hao की कैप्स गाइस। और एक बहुत ही डोप किस्म का आर्टिजन की कैप भी हमने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, जो कि हमें भेजा गया है समिट की कैप्स की तरफ से गाइस। यू कैन बाय ऑल दिस की कैप्स एंड कस्टम आर्टिजन की कैप्स एज वेल फ्रॉम देयर साइट्स, ऑल द लिंक्स इनटू द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो गाइस, नाउ टॉकिंग अबाउट द पीसीबी कनेक्शन गाइस। पीसीबी कनेक्शन जो है वो सी टाइप कनेक्शन है, और फॉर दैट सी टाइप कनेक्शन यू विल नीड अ कस्टम ग्रिडेड केबल. Skippy Custom is also making really great custom cables guys, but due to some shipping issues हमें वो केबल जो है नहीं मिल सकी. So in this project we are using a really great cable by a cablemod, which is also a ग्रिडेड केबल विच यू कैन विजिट देयर साइट, और उनकी साइट पे जाके उनके कॉन्फ़िगरेटर को आप यूज़ करके अपनी पसंद की, अपनी कनेक्टर्स के साथ, अपनी चॉइस की कोई भी कीबोर्ड केबल जो है वो आप बिल्ड कर सकते हैं बहुत ही ईजी स्टेप्स के अंदर. उनके भी लिंक मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप उस पर जाके ईजिली उनको विजिट करके बाय कर सकते हैं. Now coming to the testing of this keyboard guys, we have tested this keyboard on different gaming articles. Also we have tested the keyboard for different typings. बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है ये परफॉर्म करता है गाइस, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी बहुत ही जो है वो क्विक किस्म का रिस्पॉन्स टाइम है. The PCB we have used in this keyboard is 65% mechanical keyboard PCB guys. Moreover, the PCB is swappable, means कि आप easily इसके अंदर जितने भी इसके switches वगैरह लगे हुए हैं वो आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप वो swap कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक. बट इसके अंदर जो गाइस हमने स्विचेस को यूज़ किया है, दोज आर गेटरॉन वाइट स्विचेस, और दे आर प्रॉपरली ल्यूब्ड एज, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया है कि स्विचेस और स्प्रिंग्स वगैरह को आप किस तरह ल्यूब और ऑयल कर सकते हैं. उसी मेथड को यूज़ करके हमने इसके तमाम स्विचेस को जो है वो ल्यूब किया हुआ है और ऑयलिंग. So here you can see I have opened the VIA software guys, downloaded from the site of the link given at the Skippy Customs. These are the tabs over here. Just go into the design and from here load the downloaded log file from the site we have already downloaded, and then go into the configuration tab. In the configuration tab, after loading that file, you can see all the things are over here. First of all, the key map, which you can use to change the functions of your keys and different things over here. As you can see, you can replace any of the key according to your choice, and also can name the keys. Now coming to the macros are the special functions and the shortcut keys. And coming into the tab of the lightning, you will find all the different modes of the lightning. There are many modes over here. Just clicking these mode, you will change all the lighting effects of your keyboard. Very easy. And the brightness tab can also increase the brightness. Well, this is the underglow speed guys, speed of the lightning. From this tab you can change the speed of the lightning modes according to your choice. Also you can guys keep a static color in underglow color. Now from here you can save and load the old presets, and also can save the recent preset. Well, this was VIA guys, and this is a really simple software and really easy thing you can download and use according to your choice. Thank you. Now talking about the price and the warranty of this custom mechanical keyboard guys, Skippy Customs is offering you warranty of 2 years on all the components of this keyboard guys. Also they are offering the warranty of 5-year workmanship, which is I think really great. Moreover, if you buy about $50 USD, then Skippy Custom is going to offer you free shipment worldwide.
नाउ कमिंग टू द प्राइस ऑफ दिस कीबोर्ड गाइज, अगर आपने इनका प्री बिल्ड वर्जन जो है बाय करना है, पूरा जो है प्री बिल्ड वर्जन जो है इनकी साइट के ऊपर अवेलेबल है, दैट विल कॉस्ट यू $300 और अगर आप कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड का जो है वो बनाने का एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देन यू हैव टू बाय ऑल द पार्ट्स एंड द कंपोनेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ स्किपी कस्टम्स, जहाँ पर जाके आप इजीली अपनी चॉइस के मुताबिक सारे कंपोनेंट्स को जो है वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, और प्राइसेस भी उधर उन्होंने मेंशन की हुई है गाइज। वेल गाइज, दिस इज टाइम टू रैप अप द वीडियो नाउ। थैंक you so much for watching my video. If you have anything to ask, you can mention into the comments. We do answer our comments, and guys, I will see you into the next one now. Thank you.